Hello, viewers. Good afternoon and assalamu alaikum. And I'm Mohammad Tariq Hassan, and I'm just having a cup of tea, right? And today, no more fun, only just food recipe I'm going to share in my channel. And today we're going to make okra. Okra, about 1 kilo, right? And we already got ingredients here, and I'm going to show you this very easy and very quick recipe. So I'm going to show you in this video how to make okra very tasty and very mouthful curry with the spice. So don't miss this video, watch till end. So let's come with our recipe. Okay viewers, so let's start our recipe. Already got the pot here, and I just put some water in it, like it's 1 cup water. All right. All right, we turn on the stove now, and we got already about 5 tomato. So we just put it here inside the pot. Make them a little bit softer. We just cover the lid. And viewers, what we need for the okra curry, we already got here some spices, about one and a half tablespoon coriander, 1 spoon chili powder, right, and half a spoon, or you can teaspoon, 1 teaspoon cumin powder, garam masala, half a spoon, and the turmeric powder, half a spoon, and salt as per your taste. So we need all these ingredients for okra curry. So we already turned on the stove, make a little bit softer our tomato, and when it's becomes soft, it's about 10 minutes. So I just cover the lid. It's soft, make it steam, so we can peel the skin of the tomato. All right, and okra already we cut off the head, right, and we cut okra from the half. So what happened to the spice inside, so it's a make more tasty. And viewers, I'm enjoying having a cup of tea. That's my high tea, and samosa. That's आलू समोसा. ये आलू समोसा है दोस्तों, और चाय. शाम को मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर करूं, तो साथ साथ चाय और समोसे एंजॉय करूं. और आप लोग दोस्तों मुझे बताइएगा मेरी रेसिपी वगैरह, और जो मैं रिव्यूज़ देता हूं और मेरे व्लॉग हैं, आपको कैसे लगते हैं. ठीक है, और आप लोग कमेंट्स करें और मुझे बताएं. और आप लोगों की कोई रेसिपी आप मैं जैसे कि मैंने बताया कि आई एम नॉट द प्रोफेशनल शेफ, राइट, बट आई कैन कुक. सो जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, वो उनको पसंद है मेरे हाथ का खाना, तो इसलिए मैं रेसिपी जो है मेरा शौक़ है. और मैं बाज़ वक्त आप लोगों को बाहर लेके जाता हूँ, रेस्टोरेंट में लेके जाता हूँ. सिडनी के ख़ास तौर से जो रेस्टोरेंट्स हैं, साउथ एशियन वेस्टर्न रेस्टोरेंट्स एवरीवेयर. सो आई एम ट्राइंग टू गिव द रिव्यूज़ ऑफ द फूड, कि किस रेस्टोरेंट में किस तरह का खाना है, प्राइसेस क्या हैं, टेस्ट कैसा है. ठीक है ना. तो आप लोग जब भी सिडनी जो लोकल लोग हैं और जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ताकि उनको पता रहे और मेरी वीडियो से वो उनको मालूम हो सके कि यहाँ पे किस किस्म के किस तरह के खाने किस तरह रेस्टोरेंट में मिलते हैं. तो व्यूवर्स, मुझे आपके कमेंट्स का कि आप मुझे बताएं आपकी रिकमेंडेशन क्या है और आप लोग किस किस्म के खाने पसंद करते हैं. ठीक है ना. जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने टोमेटो जो है इस पॉट में रखा हुआ है अभी गर्म करने के लिए, हल्का सा वो सॉफ्ट होगा. तो वी कैन मेक द पोटैटो पेस्ट, right, and then we can add all our spices. Very easy recipe, and little bit 5-10 minutes fried with on okra with all the spices, and just cover the lid, and it will take about, leave it on low flame about 15 minutes, and your okra curry will be ready. I'm just enjoying the samosa. Very tasty. बल्कि सॉरी, ये आलू के समोसे नहीं है, ये चिकन की फिलिंग है अंदर. चिकन को मिक्स किया हुआ है और किसी पेस्ट के साथ, लाइक आई थिंक
कोरिएंडर है और बहुत टेस्टी है ये, इतना स्पाइस नहीं है और वेरी टेस्टी। मेरे इस चैनल में बहुत पहले मैंने समोसे की भी रेसिपी अपलोड की है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं और घर में खुद समोसे आप बना सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी भी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। नाउ वी जस्ट रिमूव द लिड। लुक, as you can see that tomato already soft and the skin already separate, so we can peel the skin and take it out from the pot. Okay, ये हम यहाँ रख देते हैं और इसकी स्किन को हम यहाँ से पॉट से निकाल देते हैं। ओके, and just put a little bit low flame और अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से जो भी है 1.5 स्पून ऑयल शुड बी इनफ। ओके दोस्तों, एंड just smash all the tomato and make it the paste. Okay viewers, now as you can see that we already very nice tomato paste. Okay, and now our next step, all these spices gonna go inside the pot. All right, so first chili powder, then coriander powder, then cumin powder. I think that's the garam masala, that's the cumin powder, half a spoon, and a little bit turmeric powder. Leave it salt for later and mix a little bit all the spice with the tomato paste. Adjust the flame. If you think it's very high flame, so just make it low or medium. Just mix all the spices with the paste. तो दोस्तों, आपने देखा कि टोमेटो पेस्ट तैयार हो चुका हमारा। हमने तमाम स्पाइसेस इसमें मिला दिए हैं। ठीक है, स्पाइसेस में जो हमने इसमें मिक्स किया है वो वही जो नॉर्मल हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं कि चिली पाउडर हमने डाला है 1 स्पून, 1.5 स्पून कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक पाउडर और गरम मसाला। ठीक है ना ये, और इसको करने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। ओके व्यूअर्स, नाउ वी गोइंग टू ऐड आवर ओकरा। So just put all the okra with the spice and mix okra with spice and paste. देखिए इसकी अच्छी तरह से पेस्ट स्पाइसेस को हमने मिक्स कर लिया है और अब चाहें तो फ्लेम थोड़ा सा ज़्यादा कर लें इसको मिक्स करने के लिए। और अब आप चाहें तो इसकी सॉल्ट ऐड कर दें। सॉल्ट मुझे लग रहा है कि कुछ कम है तो मैं और इसमें सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करूँगा। और इसको फिर जस्ट स्टर विद स्पून। इसको आप फ्राई कर लें।
इसको मसाले के साथ दोस्तों अच्छी तरह से फ्राई कर लें, तकरीबन 5 मिनट फ्राई कर लें, काफ़ी है इसके लिए। Okay, viewers, now we already fried our okra with the spices. Okay, and we're going to add about 1 cup of water. दोस्तों हमने इसको फ्राई कर लिए है ओकरा को, अपनी भिंडी को, ठीक है। और अब हम इसमें थोड़ा सा तकरीबन 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं। Now we already added up 1 cup of water, and what we're going to do, we just cover that lid and a little bit low flame, and just leave it this on the stove about 15 to 20 minutes. 15 minutes should be fine. Okay viewers, now already 15 to 20 minutes, so we're going to remove the lid and look at that. Wow, it's a beautiful texture, and our okra curry already ready. So put the cover here. All right, we can turn off our stove and look at that, how beautiful. Okay, we can move the stove here. We can dish out in this plate. Okay, we already dish out our okra curry. That's our final dish, and I'm going, and as a garnish you can put it this chili. We already cut the julienne cutting. All right, and squeeze the lemon. And after that I'm going to taste and going to tell you guys how this our okra curry today in taste. All right, okay, we squeeze this one. Okay viewers, now I'm going to taste this tasty our okra curry. Okay, mix it up. In my one bite, 1 okra, 1 chili inside, a little bit of spice. Superb. Very nice taste, you know. Everything is balanced. All the spices with the paste, tomato paste, all is balanced. Salt, and look at that, how tender the okra, very soft. And if you like this video, so please like, share and comments, and definitely like our channel, and put some recommendation in the comment box, what recipe would you like to try. All right, so till next video, Allah Hafiz.